morning, students. So today we are going to start with the first chapter of business studies, that is nature and purpose of business. So before we are going to start with the chapter, the first thing which comes in our mind is what exactly a business is. How can we differentiate between a thing which is said to be a business and the other which is not a business? So practically when we go to market, we see a shopkeeper selling goods in his store, a big store, a big departmental store like Big Bazaar or Vishal Mega Mart. We often see in news channels a billionaire doing business. We have heard about the Tata Industries, the Birla Industries and the Reliance Industries, so on. So collectively these all are doing a business. But how can we define that it is a business? So first thing is that a business is related with the transfer, buying, selling or exchange of goods and services. Now what are the goods and services? Goods are those things which we use in our daily life, which we consume, like durables, like consumable goods. For example, the groceries, the stationeries, the daily need products, the durable goods like the furniture in their home, the refrigerator in your home, or goods can be termed as capital goods like machineries which are used for producing other commodities in a industry. Then coming to services, services are those which helps you in doing certain activities like communication, banking, insurance, etc. So what exactly a business is? When a person is doing certain thing to earn his livelihood, doing the production or providing goods and services. And another factor is that should be done on a regular basis. Like I am having old newspapers at my home and I am selling that, but it is not done on a regular basis. It's occasional that when I am having a stock of newspaper, I'll sell them to the people, but when I'm not having that, I don't sell. So now it cannot be termed as a business because we don't do it on a regular basis. So anything which is done on a regular basis for earning livelihood related with the goods and services is called as business. So getting towards the exact definition, the word to word definition is that the term is derived from the word busy, that is means being busy. Business is an economic activity carried on by a few or more individuals to produce, buy or sell goods and services that satisfy human needs and help in earning income done on a regular basis. Then there is one term termed as economic activity and non-economic activity. So what is an economic activity? With an activity which is carried out to earn money, to earn livelihood. And what is a non-economic activity? Any activity which we do with the love, affection, sympathy or any other personal feelings. It does not create any amount for livelihood or earning any income. The next topic is characteristics of business activities. Now the first characteristics of a business activity is it is an economic activity. As I have said earlier that business is done for earning livelihood. जब तक हम किसी बिजनेस को पैसे कमाने के लिए नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो बिजनेस हो रहा है. एक शॉपकीपर शॉप खोलता है कि वो सामान सेल करेगा एंड देन उससे पैसे अर्न करेगा. वी कैन नॉट ऑप्ट फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर डूइंग चैरिटी पर्पसेस. The second characteristic is production and procurement of goods and services. Now the production and procurement, there are two different words. Production means कि हम जो भी goods sale करेंगे या हम जो भी services provide कर रहे हैं, we are producing that by our own. Or procurement means it has already been produced in some of the factories or by some other persons and we are just getting that product in our store, in our shop and then providing it to the consumers. The third is sale and exchange of goods and services. Now there is a compulsory characteristic that there should be an exchange of goods and services. सेल जब तक नहीं होगा, जब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं होंगे फ्रॉम बायर टू
फ्रॉम सेलर टू बायर, तब तक हम नहीं कह सकते कि यह बिजनेस हुआ है. So there need to be an exchange between the buyer and the seller for the goods. Next is dealing on a regular basis. The goods has to be dealt in on a regular basis, only then it can be termed as a business. Occasionally करना, आपके घर में कोई पुरानी कार है, you have sold that car to True Value or you have sold that car on OLX or any other website, then you cannot say that you are doing a business because it has been occasional. हमारे पास हर महीने या हर दिन या हर साल कार नहीं आती जिसको हम सेल करते हैं. ये हमने सालों तक कार को यूटिलाइज किया एंड देन वी हैव रियलाइज्ड कि अब वो कार पुरानी हो गई है और हम सेल कर देंगे. सो ये बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता. बिजनेस वही है जो कि रेगुलर बेसिस पर होगा. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट अर्निंग. Whatever business we start, the main motive is to earn profit. हम चैरिटी करने के लिए बिजनेस नहीं चलाते, है ना. हम ऐसे तो इमेजिन नहीं करेंगे कि चलो आज एक शॉप खोलते हैं और जो भी पर्सन आएगा हमारे पास सामान लेने के लिए हम उसको फ्री में सामान दे देंगे. नहीं, we always get money, we always get some consideration in exchange of our goods. So profit earning is the main motive of business. Next is uncertainty of return. Now what is uncertainty of return? It means that we don't have any knowledge regarding the future events, regarding the returns which we can earn from a business. Sometimes ऐसा भी हो सकता है कि आपने 1 लाख की कैपिटल लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया एंड यू आर अर्निंग 10 lakhs out of it. Sometimes it may happen कि आपने 1 lakh की कैपिटल लगाया एंड यू आर अर्निंग 10,000 out of it. And sometimes it may also happen that you have invested 1 lakh and earning only 100 or 1,000 rupees out of it. So the certainty of returns is not similar in all of the cases. Hence, it is the possibility of risk, the uncertainty of losses that can be happen in a business. Next characteristic is element of risk. The risk is always associated with a business. Without risk, there is no business. हम किसी भी बिजनेस को ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते कि ये एक सबसे सेफ साइडेड बिजनेस है और इसमें कभी रिस्क नहीं होगा, कभी कोई रिसेशन नहीं आएगा, कभी हमें लॉसेस नहीं होंगे. हर बिजनेस के अपने सर्टेन रिस्क होते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नाउ हियर इज अ कंप्लीट टेबल गिवन इन योर नोट्स. There are three types of things, economic activities. First is the business, second is the profession, and third is the employment. In a nutshell, what is a business actually? As we have already discussed, it is something which is done related to the sale of goods and services with the motive of earning income and on a regular basis. What is a profession? When a person has a professional degree, when a person is a professional person and providing his services. And what is the employment? When a person goes to a institution, goes to an organization and asks for getting him a job. Okay, then first there are categories to differentiate between these three. The first basis is mode of establishment. So the business, it is established on the basis of the decision of the entrepreneur and the legal processes. Like if I want to start a business, मेरा मन कर रहा है कि चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? इट्स आवर सोल डिसीजन कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है. एंड आफ्टर दैट जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी बिजनेस से रिलेटेड, वो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी एंड योर बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड. फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल हमें क्या चाहिए? हमें एक प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप चाहिए. लाइक इफ समबडी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो वो एक दिन में डॉक्टर नहीं बन सकता. ही हैज टू बी एसोसिएटेड विद द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. एक प्रॉपर कोर्स के थ्रू से जाना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, वहां के सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे एंड देन ही कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर. For employment, we just need an employment letter, a appointment letter, a call letter which we say from the organization कि yes, you are employed as a job. Next is the nature of work. In business, the main work is to provide goods and services to your final consumers. In profession, we require the rendering of personalized service. Like जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में होता है कि हमें एक ही डॉक्टर की दवाइयां सूट करती हैं और दूसरे डॉक्टर की दवाइयां नहीं सूट करती, तो इट्स जस्ट द पर्सनल सर्विस रिलेशन विच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द प्रोफेशनल एंड द सर्विस टेकर्स. एंड एम्प्लॉयमेंट में वी जस्ट हैव टू कंप्लीट द वर्क एंड गिव आवर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. जो भी आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स में, कॉल लेटर्स में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे होंगे, जो भी कंडीशंस लिखी होंगी, उनको सेटिस्फाई करना इज एम्प्लॉयमेंट.
The third point is qualification. For business, we don't need any qualification, right? आपके कॉलोनी में, आपके रेसिडेंशियल एरिया में जो शॉपकीपर होंगे, बहुत अच्छी शॉप चला रहे हैं, उनकी काफी अच्छी दुकान चलती है, उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट भी होता है, बट इट डजंट रिक्वायर कि वो भी ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड या कंप्लीट स्कूलिंग करके आए होंगे. मे भी हो सकता है कि उनने सिर्फ 10th पढ़ा हो या 12th पढ़ा हो या ग्रेजुएशन आधा अधूरा किया एंड देन ही केम इनटू बिजनेस लाइन. So for establishing a business enterprise, qualification is no bar. For profession, we need to be qualified as a professional. है ना, विदाउट डॉक्टर डिग्री लिए या विदाउट लॉयर की डिग्री लिए हम एज अ प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकते. एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगेन वी नीड क्वालिफिकेशन दैट आर स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशंस होते हैं. सो फॉर द पोस्ट विच वी वांट टू अप्लाई, उसमें जो भी क्वालिफिकेशंस दिए हैं हमें उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड और रिटर्न. हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? तो व्हेन वी आर डूइंग अ बिजनेस, वी आर गेटिंग प्रॉफिट इन रिटर्न. When we are doing a profession, we are getting professional fee as a return, and when we are doing a employment, we are getting salary or wages as in return. The next is the capital investment. If we talk about business, the capital investment is required and it's pretty much high depending on the nature and size of business which you are opting. For example, if you just want to start a shop, a small shop, a grocery shop or a daily need products, a kirana store type, then you need less capital. If you want to start with a departmental store, if you want to go start with a mall, then you require high capital. If you want to start with a company, with a partnership firm, with a producing firm, with a factory, then you require much high capital. So the capital requirement in the case of business depends on how much people you require, how much work you want to do, and how big you want your organization to be. In the case of profession, we require very limited capital just to establish our office. If you have ever been to a lawyer, तो लॉयर के ऑफिसेज में ज्यादा कुछ नहीं होता है. दे जस्ट हैव 1 cabin और 2 cabins, that's it, and it is pretty much sufficient to conduct their work. And if we want to go for employment, then no capital is required because you just have to got that call letter और आप कंपनी में जाओ, जॉब करो और कंपनी छुट्टी हुई तो कंपनी से वापस आ जाओ. Then next point is risk. If we talk about risk, then business is highly risky. हाईली रिस्की वाई आई एम सेइंग, क्योंकि मार्केट की सिचुएशंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं. मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो चेंज होता रहता है. एंड हर दिन टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जाती है. तो अकॉर्डिंग टू दैट हर टाइम पर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड्स भी कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से चेंज हो जाती है. दैट्स वाई बिजनेस इज हाईली रिस्की. इफ यू टॉक अबाउट दिस प्रोफेशन, then the risk here is very low. Why? Because the fee, the regular fee which the professional person is getting, it's on the daily basis. Like डॉक्टर को सर्दी गर्मी बरसात के सीजन से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता बिकॉज पीपल हर एक कांस्टेंट विजिट पर डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोफेशन, then if you talk about employment, then the fees which they get in return is the salary or wages which is fixed. Again, आप अगर किसी employer के यहाँ काम कर रहे हो तो हर मंथ की सैलरी, हर मंथ की wages fixed होती है और रेगुलर इंटरवल्स पे पे हो जाती है. Then there is next point is transfer of interest. If we talk about business transfers, then it is pretty much difficult to transfer a business from one person to another. Like it is possible with some of the legal formalities. Like अगर आपके फादर का बिजनेस है तो आप उसमें हेल्प कर सकते हो, बट कम्प्लीटली टेक ओवर जब बिजनेस को करना होगा तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल प्रोसेसेस हैं जिनको हमें कंप्लीट करना पड़ता है. इफ वी टॉक अबाउट प्रोफेशन, देन ट्रांसफरेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल. लाइक इफ आपके पापा अगर डॉक्टर है या आपके पापा लॉयर है तो कल को उनके केबिन में बैठ करके आप स्टेथोस्कोप लगाकर पेशेंट्स को चेक नहीं कर सकते. It is not allowed actually. तो प्रोफेशन के केस में ट्रांसफरेबिलिटी इज नॉट अलाउड. एंड इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगेन आप अपनी जॉब को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय जॉब कर रहे हो, थोड़े दिन बाद आप बोलो कि आपको हटा करके आपके सिस्टर को या आपके ब्रदर को वो एम्प्लॉय कर ले, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर पर्सन की क्वालिटी, हर पर्सन की
एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट किया जाता है. Next point is code of conduct. If we talk about code of conduct, what is exactly a code of conduct? It is some guidelines which has to be followed. So in business there are not as such guidelines कि आप यही काम करोगे, ये नहीं कर सकते, आपको हर कस्टमर से अच्छे से बात करनी पड़ेगी, आपको हर कंपनी. दीज आर द सोशल नॉर्म्स कि जब भी कोई कस्टमर आएगा सो वी ग्रीट हिम लाइक हेलो नमस्ते. बट देर आर नॉट एज सच कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड इन रिटन फॉर्म. But if we talk about profession, then there are code of conducts. We have seen like Munna Bhai MBBS, if you have watched, तो उसके first day पे when they go to college, they take a oath. That oath is a code of conduct. And again, in the terms of employment, there is a code of conduct prescribed by the organization. Next topic, which is next heading, is classification of business activities. Now there are certain classification of business activities. There is a complete chart given in your notes. The first category in which we divide the business activity is industry and commerce. Now what is exactly a industry? Industry is that where the resources are converted into finished goods, and that finished goods then be transferred to the final consumers for their daily consumptions. Now the industries has three types: primary industries, secondary industry and tertiary industry. What are primary industries? Which are related with agriculture, fisheries, mining, etc. वो नेचर से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके लेकर आते हैं, नेचर से चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, फार्मिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, और वहां से जो रिसोर्सेज निकल के आते हैं उनको देन आगे ट्रांसफर करते हैं. प्राइमरी में we have two type of industries. First is extractive, then second is genetic. As I said, कि farming, mining, these all come under the extractive industries because we are extracting the resources, we are getting the minerals, we are getting the things out of the nature. And second is the genetic industry. This is related with the genes, like fishing, like plant rebudding. यहाँ पर क्या होगा, फिशरी का जिसका बिजनेस है या पोल्ट्री फार्मिंग है, तो दे कीप ऑन reproducing the animals, they keep on budding the animals, budding the plants for the future consumptions. Next is the secondary industries. Secondary industries are there where we process these raw materials, these natural resources into finished goods which can be provided to the consumers. Secondary industries have various different types. First is the manufacturing industry. Manufacturing industries are those which process the raw material and create the new product. Manufacturing again has four type of industries. First is the analytical industries. Analytical industries are which analyzes and separates the different constituents of a single product. For example, oil refinery. So oil refinery का raw material क्या होता है? It's exactly a crude oil. And then when it goes to oil refinery, तो उसी crude oil में से petroleum, diesel, grease, kerosene, ये सारे elements अलग अलग किए जाते हैं. तो this comes under the analytical industry, which analyzes the product and differentiates it into different constituents. Next is the synthetical industries. Synthetical industry is just opposite of analytical. It combines different ingredients, combine different constituents and form a single product, like cement industries. Then is the processing industries. Processing industries are those industries which goes with successive stages of processing one single product. For example, in the case of sugar and paper, if you have seen sugar production, so sugar is just a single product, just a single thing, जिसकी बहुत लंबी processes होती है and हर stage पर sugar refine होकर के then end पे final product बनता है. Last is the assembling industry. What is assembling industry? Assembling industry अलग अलग जगहों से छोटे छोटे components लेकर के, छोटे छोटे parts लेकर के आते हैं and then final product में उसे assemble करते हैं, like कंप्यूटर्स में जैसा होता है, जैसे मोबाइल गैजेट्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होता है, ये सब क्या है, असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं. एंड नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या काम करती है? बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना, टनल्स कंस्ट्रक्ट करना, कैनाल्स बनाना, डैम्स कंस्ट्रक्ट करना. इसमें गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और प्राइवेट इंडस्ट्रीज दोनों आ सकती है. ठीक है. नेक्स्ट द थर्ड इज टर्शियरी इंडस्ट्रीज. टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? दीज आर दी सर्विस प्रोवाइडर्स, जो भी आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे फैक्टर्स किसमें आते हैं? टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं. नेक्स्ट
part is commerce. Now what is exactly a commerce? Commerce, it is what provide a link between producers and consumers. It is actually the to maintain the free flow of goods and services. Like हमने प्रोडक्शन तो गुड्स का कर दिया, सारी इंडस्ट्रीज ने रॉ मटेरियल्स भी इकट्ठा कर लिए और उनसे फिनिश गुड्स भी बना दिए, बट अब उन गुड्स को फैक्ट्री से लेकर के फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना और वो भी हर शॉप में अवेलेबल कराना. लाइक सी, आप लेज के चिप्स का पैकेट खरीदने जाते हो तो वो आपकी नियरेस्ट शॉप में भी मिलता है, वो मेन मार्केट शॉप में भी मिलेगा, वो आपको सिटी में जाके भी मिलेगा, वो आपको बड़े स्टोर्स में भी मिलेगा, वो आपको छोटे स्टोर्स में भी मिलेगा, मिठाई की दुकान में जाओगे वहां भी मिलेगा. मीन्स एवरीवेयर द लेज हैज इट्स स्पेस. व्हाई? हाउ इट इज पॉसिबल? सो it is just because of this commerce. This commerce facilitates the mobilization of goods and services from one place to another so that consumer can get their product very easily at any place in their market. Okay? Then there are different hindrances which can be removed by commerce. Like hindrance of person, it is removed by trade. Hindrance of place is removed by transport. What is exactly a hindrance? हम ये कह सकते हैं कमी, कि लाइक हमें टाइम की कमी अगर होती, हमें प्लेस की जो प्रॉब्लम है वो किससे सॉर्ट आउट हो रही है? ट्रांसपोर्ट की वजह से. पहले ऐसा होता था कि फैक्ट्रीज बहुत दूर होती थी, लोग बहुत दूर रहते थे, बार्टर सिस्टम वी हैव हर्ड अबाउट. तो वहां पर क्या होता था कि हम दूसरे ज्यादा लोकेशंस पर नहीं जा सकते थे, तो आपस में ही जो प्रोडक्शन है उसी को बांट लेंगे, उसी को ले दे करके उसी में सेटिस्फाई कर लेते थे. लोग ज्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं करते थे क्योंकि वो उतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकते. बट आज की डेट में द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हैज बीन एलिमिनेटेड बाय ट्रांसपोर्ट. Next is hindrance of storage and warehousing facility. This has been removed by time. Then hindrance of risk and loss of damage is removed by insurance. हमें कोई भी रिस्क होता है, आज की डेट में बहुत सारे तरह के इंश्योरेंसेस होने लगे हैं. We do marine insurance, fire insurance, we have life insurance also. Later on we have a complete chapter on this insurance topic. तो वहां पर हम बहुत सारे इंश्योरेंस के पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो अभी के लिए क्या समझना है कि कोई भी लॉस होगा, कोई भी रिस्क होगा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या फैसिलिटी है? इंश्योरेंस की फैसिलिटी है. देन अगर हमें कैपिटल फंड्स चाहिए, हमें पैसे चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, गियर अप करने के लिए, या बीच में भी कभी भी वांट कि हमें बिजनेस एक्सपैंड करना है, हमारी एक शॉप है, हम उसको बड़ा बनाना चाहते हैं, या एक की दूसरी ब्रांच सेटअप करना चाहते हैं, तो फॉर दैट कैपिटल फंडिंग, फॉर दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट वी हैव बैंक्स, वी हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें लोन्स दे सकते हैं, जिनके थ्रू हम बिजनेस को आगे चलाएंगे. Then hindrance of knowledge and information, it is removed by advertisement. आज की डेट में आप कोई भी चीज देखो, whatever product you buy, 80 to 90% is influenced by the advertisement. हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जाकर के खरीदते हैं इसलिए क्योंकि हमने उसका टीवी में ऐड देखा था और वो हमें बहुत अपीलिंग लगा, बहुत अप्रोचिंग लगा, हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे उस ऐड को देख करके, एंड देन वी केम टू ट्राई दी प्रोडक्ट. तो एक्चुअली हर नए लॉन्च प्रोडक्ट का नॉलेज, उसके यूजेस के बारे में बताना, उसकी कॉम्पिटिटिव प्राइस के बारे में बताना, ये सारा कुछ काम किसके कारण होता है? एडवर्टीजमेंट के कारण. देन इट इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ एक्टिविटी. Commerce includes two type of activities. One is the trade and second is the auxiliaries to trade. What is trade actually? It is simple, the transfer of goods and services from one person to another person. हर बार आप ट्रांसफर करोगे गुड्स का तो वो ट्रेड है. Trade can be of three types: internal, external and interport trade. इंटरनल ट्रेड एक कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर जो भी ट्रेड होगा वो क्या है? इंटरनल ट्रेड है. देन अगेन एक कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन, एक कंट्री के पीपल जो दूसरी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन या पीपल से डील करेंगे, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड. जो विद टू और मोर कंट्रीज के साथ में होगा वो एक्सटर्नल ट्रेड. एंड इंटरपोर्ट ट्रेड इज लाइक कि एक कंट्री से सामान हमारे यहाँ आया और हमने एज इट इज उसको फॉरवर्ड कर दिया किसी अनदर कंट्री के लिए, तो वो हमारे यहाँ कंजम्पशन में नहीं यूज हुआ, जस्ट वी हैव acted as a medium of exchange between one country and the another one. So that is called interport trade. And when we talk about auxiliaries to trade, again these are the support system of trade. They support in the facilitating the trade, they support in the transfer of goods and services and work so on.
Now there are various auxiliaries. Number one is transport and communication. As we have already discussed कि ट्रांसपोर्ट से आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से गुड्स को मूव करवा सकते हो किसी भी लोकेशन पे. आप आज की डेट में जो भी चीज खा रहे हो, जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, यू कैन नॉट इमेजिन कि वो किस फैक्ट्री में बन रहे हैं या किस लोकेशन से बनकर आए हैं, बट हमें वो सारे प्रोडक्ट्स अपने डोर स्टेप पे अवेलेबल हो जाते हैं. नियरेस्ट सारे रेसिडेंशियल कॉलोनीज में जितने भी स्टोर्स होंगे, किराना स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, ग्रोसरी शॉप्स, उन सब जगह पे वो गुड्स अवेलेबल हैं. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट इज पॉइंट इज कम्युनिकेशन. अब कभी क्या है कि हमने सामान तो यहाँ से भेज दिया, बट कॉल करके कंफर्म भी तो कराना पड़ेगा कि हमने यहाँ से सामान भेज दिया है, आपको रिसीव हुआ या नहीं हुआ. तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए वी हैव द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. नेक्स्ट इज द बैंकिंग एंड फाइनेंस. कभी भी बिजनेस में हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, फंड्स हमारे पास कम है, हमें एक्स्ट्रा लोन चाहिए है, ये सारी फैसिलिटीज कहाँ से मिलती है? बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से मिल जाती है. देन वी हैव इंश्योरेंस. अगेन हमारे बिजनेस को सेफ गार्ड करने के लिए हमारे पास जो गुड्स का स्टॉक रखा हुआ है गोडाउन पे, या हमारे गुड्स जो किसी रास्ते में अभी आ रहे हैं, हमारे पास पहुंचे नहीं है, इन सारे तरह के गुड्स को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए वी हैव द इंश्योरेंस फैसिलिटी जो इस रिस्क को मिनिमाइज करती है. देन वी हैव वेयर हाउसिंग ऑप्शन. वेयर हाउसिंग इज व्हाट? जहां पर हम अपने गुड्स को या अपने स्टोर को, अपने स्टॉक को ले जाकर के संभाल के रखते हैं. अलग अलग तरह के वेयर हाउसेज होते हैं. कुछ कोल्ड स्टोरेजेस भी होते हैं जहां पर ग्रेन्स वगैरह को रखा जाता है. कोल्ड स्टोरेजेस में मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को रखा जाता है. और कुछ नॉर्मल स्टोरेजेस होते हैं जहां पर हम बेसिक सारा सामान रख सकते हैं जो जल्दी पेरिशेबल नेचर का नहीं होता, खराब नहीं होता. देन देर इज एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आज की डेट में कोई भी नए प्रोडक्ट का अगर लॉन्च होता है या नए प्रोडक्ट को हमें मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना होता है, सो वी हैव एडवर्टीजमेंट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम फॉर दिस. आज की डेट में अभी जैसे बताया कि 80 to 90% सेल्स जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट होती है. एंड हर एडवर्टीजमेंट का नेचर भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है. लाइक यू हैव सीन कि बच्चों के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक जेम्स है, किंडर जॉय है, तो दे हैव मेड सच क्रिएटिव एड्स फॉर दैट. सच चॉकलेट्स के कितने सारे क्रिएटिव एड्स होते हैं, सो दैट आप उस एड को देख करके फैसिनेट हो जाओगे उस प्रोडक्ट के लिए. एंड व्हेनेवर यू गो टू द मार्केट, और अगर आपको सामने वो प्रोडक्ट दिख गया तो आपके दिमाग में वो एड रिप्ले होना स्टार्ट हो जाता है. एंड यू फील लाइक हाँ यार, एड कितना अच्छा दिख रहा था, अब तो हम ये प्रोडक्ट खरीद के लेके जाएंगे. So that's why it promotes in selling of a single product.